Erskine Foundation. Sanatan Vidyalay, which is an initiative of the Erskine Foundation, has 3 centers in Hillsborough, Piscataway and Kendall Park. To know more about our school, visit our website sanatanvidyalay.org or send us an email at sanatanvidya@gmail.com or call us on 908-671-1344. And this is your host Suchitra along with दीप्ति. नमस्कार लिसनर्स एंड वेलकम टू ज्ञानामृत. आज हमारा जो शो है वो स्पेशल है. हमारे साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं. And students, do you want to say hello to the listeners, say namaste to them and tell your names, how old are you and which center do you go to? I am Sion. How old are you? I am 6 years old. And which center do you go to, Sion? I go to Piscataway Center of Sanatan Vidyalay. Okay. Next we have... My name is Shreya. I am 12 years old. I go to the Piscataway station of Sanatan Vidyalay for 3 years. Okay. And we have one more student. Hello, my name is Adika. I'm 9 years old. I go to the Piscataway Center of Sanatan Vidyalay and I've been going for 3 years. Okay, it's great to have all of you here. So welcome to the studios of EBC Radio. And today we will talk about Navratri. क्यों दीप्ति? हाँ, हम लोग आज नवरात्रि, क्योंकि नवरात्रि आजकल चल रही है सुचित्रा, और लोग बाग जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि. तो नवरात्रि जो 9 दिन है, 9 देवियों की पूजा होती है ना. तो 9 देवियों का एक्चुअली क्या है कि जो नारी का जो रूप है, 9 डिफरेंट स्टेजेस, उससे रिलेटेड है 9 दिन की जो देवियां हैं. Okay. तो वो अगर वैसे एक्सप्लेन करने जाएंगे तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बट जस्ट टू नो कि नारी के विकास का जो रूप है वो है नवरात्रि. हर दिन जो एक एक गॉडेस की जो पूजा की जाती है, इट्स फ्रॉम चाइल्डहुड से जो विकास होता है नारी का, तो उस हर रूप की देवी है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है. Okay. हम लोग आएंगे इस डिस्कशन पे, लेकिन आज क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं, हाँ, उनसे बात करें. हाँ. So first let's start with Sion. Sion, आप स्कूल में, you understand Hindi, right, Sion? Yes. Yes. Okay. So Sion, आप सनातन विद्यालय में जो सीखते हैं, एक कोई प्रेयर सुना सकते हैं सबको, लिसनर्स को? Yes. Can you please say it? Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. Thank you, Sion. Thank you. And we want to remind the listeners that Sion is only 6 years old, and वो सनातन विद्यालय में इसी साल he came. This is his first year in Sanatan Vidyalay. Shreya, do you want to just tell the listeners about what you learn in Sanatan Vidyalay in general? We learn different prayers about different gods, and then we split up into cultural classes. Depending on how many years you've been there, you learn different things. In level 3, we're now learning about Mahabharata, and then at the end we do yoga. Okay, so Dipti, Shreya is in level 3 in Piscataway. Do you want to just give an overview of how many levels we have in different centers and how we split them? हाँ, हम लोग तीनों सेंटर्स में जो है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं. जो हमारा हिल्सबरो का सेंटर है, वहाँ पे काफ़ी समय से वो हमारा फर्स्ट सेंटर था, तो उसमें जो है अभी 4 ग्रुप्स हैं. तो छोटे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं उनको, एकदम मतलब ये ऐसे एकदम छोटे बच्चे हैं, हाँ, 5 साल से 5 से 6-7 साल के बच्चे, उन लोगों को उनके एज अप्रोप्रिएट उनको जैसे छोटी छोटी पंचतंत्र की कहानियाँ या भगवान के गॉड्स एंड गॉडेसेस की कहानियाँ और उनके बारे में बताया जाता है. उनके प्रिंट आउट्स वगैरह करके बच्चे स्टोरीज मतलब सीखते हैं इन अ वेरी इजी वे, जो वो समझ सके. उसके बाद हमारा सेकेंड लेवल है जो उससे थोड़े बड़े बच्चे हैं. तो 4 हैं हमारे हिल्सबरो में. आई वुडंट गो इन डिटेल इन दैट, बट एज अप्रोप्रिएट, जैसे 4 क्लासेस इन हिल्सबरो. पिस्काटवे में आई थिंक यू हैव 3 लेवल्स, एंड देन कैंडल पार्क क्योंकि अभी शुरू हुआ है तो उसमें सिर्फ 2 लेवल्स हैं. तो एज के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है महाभारत, रामायण
और गीता के बारे में उनको बताया जाता है, अब एज अप्रोप्रिएट। And Shreya and Sion, does anybody want to tell the listeners about something about yoga? Like, we start with the Surya Namaskar, and then we do pranayams, and then we end class. Okay, that's great. So we do the Ashtanga yoga basically, and Surya Namaskar warm up की तरह हम लोग करते हैं. And I think you all performed in the Edison Fair recently, and I think a lot of people applauded that performance. So good job on that. So और नवरात्रि पे तुम लोगों ने आई नो लास्ट ईयर जो किया था, डू यू रिमेम्बर? यू वांट टू टॉक समथिंग अबाउट दैट? तुम लोगों ने क्या किया था लास्ट ईयर नवरात्रि में? We made this art and craft with a vase and feathers, and then we also did a little bit of dandiya and danced. So what was your favorite part in that? We got to meet people from all 3 centers, and we got to celebrate all together. That's nice. Did you like doing Garba and Dandiya? Was it fun? It was nice. Yeah, that's good. Yeah, so folks, you tune into ABC Radio Network, and you're listening to the show Gyanamrit, which is a show brought to you by Sanatan Vidyalay. And to know more about our school, did you want to give out the contact information? और वेबसाइट sanatanvidyalay.org, या आप हमें कॉल कर सकते हैं at 908 सकते हैं sanatanvidya@gmail.com, और हमारा फेसबुक पेज है सनातन विद्यालय, उस पे जाइए। आप हमारी सारी एक्टिविटीज जो हुई हैं अभी तक, हम लोगों ने सब पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, आप लोग देख सकते हैं जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे. सो यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर ऑल्सो. To you is have a favorite god? Want to tell any prayer, any more prayers about any of your gods? You know Gayatri mantra very well, right? Say that on air. Go ahead with the Gayatri mantra. You say it on air. Om Bhurbhuva Swaha. Om Bhurbhuva Swaha Tolpalenyam Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Very good. Do you know which god is this? Sun. And Sayan, what do you like about Sanatan Vidyalay? So when I am over there, I do yoga and I learn so many prayers. So as we were talking about Navratri, I think we'll give some more information. जैसे दुर्गा अष्टमी बोला जाता है, राइट? दुर्गा अष्टमी क्यों बोलते हैं? तो देवी माँ जो है, उन्होंने दुर्ग के राक्षस को मारा था. दुर्ग जो जगह है उसके राक्षस, दैट्स व्हाई दुर्ग, है ना? फिर ये एक रीजन है. दूसरा है कि दुर्गति का नाश करती हैं देवी माँ. दुर्गति दुर्गा, राइट? फिर एक तीसरा रीजन है, जैसे दुर्ग का मतलब क्या है? किला. तो जैसे पुराने जमाने में भी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी, सब होती थी, तो लोग सेफ होने के लिए कैसे किले में लोग छुपते थे, राइट? किले में लोगों को रखते थे, तो दे वुड बी सेफ, राइट? उसी तरह से जब हम लोग अपने आप को माँ के उसमें सुरक्षित, माँ के पास अपने आप समर्पित कर देते हैं, तो हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं. देवी माँ हमें प्रोटेक्ट करती है. तो देवी माँ इज लाइक टू प्रोटेक्ट अस. ओके, शी इज लाइक अ फोर्ट्रेस टू डिफेंड अस. हाँ, तो हम उनके अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर दें, तो देवी माँ हमारी रक्षा करेंगी. Okay, so to all the listeners of ABC Radio, we wish you a happy Navratri, and let's listen to a bhajan, I think. Yeah. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु एकमेकविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु एकमेकविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु नित्यारूपेण
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु नित्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः To the show Gyanamrit, brought to you by Sanatan Vidyalay, which is an educational initiative of the SKN Foundation, and we have a few kids in our studio today, and they are Sion, Shreya and Ilika. अच्छा श्रेया, तुम एक जैसे आजकल अभी नवरात्रि चल रही है, राइट? सो डू यू नो एनी ऑफ द प्रेयर्स, देवी माँ की कोई प्रेयर जो तुमको पसंद है? कैन यू सिंग वन ऑफ देम फॉर अस? Sure. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना. Excellent. Shreya, do you know the meaning a little bit? थोड़ा बहुत meaning बता सकते हो लोगों को? Yeah, it means that Saraswati ji wears white clothes like the snow, jasmine flowers, and the moon. She also holds a musical instrument in her hands called the veena. She sits on a white lotus flower, and she spreads knowledge and destroys dullness. Very good. अच्छा सियान, तुम बता सकते हो, तुम जाते हो क्लास में, क्या तुम्हारा रूटीन रहता है? कैन यू टॉक अबाउट दैट बेटा? हाँ, क्या क्या करते हो? जैसे व्हेन यू गो टू द क्लास, व्हाट डू यू डू द होल थिंग, दैट 1.5 hour? कैन यू टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट? I do yoga. Okay, but how do you start the class? When you come into the class, what happens first? We do some prayers. Okay, what next? Then we get into groups. Okay. And then we do yoga. Okay, what do you do when you are in the groups? You listen to some stories? Yes. What story did you listen to today? Brahma? Yes. Okay. And Ganesh. And Ganesh. Okay, great. That's nice. So you enjoy that, right? You like to listen to all the stories? Yes. What is your favorite part in there? Like the whole thing when you go every time, like 1.5 hour, what do you enjoy most every time? The beginning of the movie. Okay, That's the movie. हाँ, जो कभी कभी शो दिखाते हो. That's nice. That's nice. And he is in the level 1, so. हाँ, हम लोग listeners को बता दें, ये सिर्फ 6 साल का बच्चा है, but the way he says all the prayers and everything. कोई एक और सोच रही है, तुमको prayers सुनाना चाहोगे? Oh, see, he's so enthusiastic. Yeah, he's I nodding love his that. head, which I like, Yeah. चलो एक और सुना दो बेटा. Achyutam Keswaram Vamanayavalinam Krishna Damodaram Vasudevam Hare Sridaram Madaram Gopika Valdaram Janaki Nadaram Vamatsandyam Hare. And to the listeners who cannot see Sion in the studio right now, I want to tell them he is not holding any book or paper. He is just 6 years old and he knows all these things. All the prayers, मतलब बहुत अच्छे से practice करते हैं. Wonderful. Which is awesome. Yeah. Awesome. So, let's continue our discussion on Navratri. नवरात्रि पे हम लोग बात कर रहे थे. अच्छा, एक और जो चीज, जो देवी की जो है 8 भुजाएं होती हैं, राइट? हाँ. 8 भुजाएं मतलब ये उनकी अष्टदा प्रकृति जिसको बोलते हैं, कि देवी माँ जो है सर्वश्रेष्ठ है ना? पूरे संसार और हमारा शरीर जो है वो 8 तत्वों से बना है. इसलिए वो 8, हाँ. तो दैट्स वाई दोज 8 भुजाएं. क्या है वो तत्व? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, बुद्धि है, वायु, आकाश, मन और अहंकार. तो इन 8 तत्वों से हमारा जो है शरीर बना है, पूरा संसार बना है. तो देवी माँ जो है इनका पूरा नियंत्रण रखती है, इन पे कंट्रोल रखती है. एग्जैक्टली. देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति से जो है ये देवी माँ का को तैयार किया था. जो महिषासुर जो राक्षस है उनको मारने के लिए
तो उनको देवताओं को सब ने मिल के और अपनी पूरी शक्ति से माँ का जो निर्माण किया था और उन्होंने फिर वध किया था, राइट। तो यही देवी माँ को पूरी तरह मतलब हम समर्पित हो जाएं, क्योंकि वो जो है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखती है, कंट्रोल में रखती है, और तभी दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। Okay, so all the children, did you know all this about Navratri before? Did the auntie told all this to you? No, I didn't. Okay, so good learning for you today, but I'm sure you're learning different things when you're coming to Sanatan Vidyalay, and we have 3 centers in New Jersey, as we mentioned, in Hillsborough, Kendall Park and Piscataway. Let's get the timing information because it's a little different in all the centers. So Piscataway Center runs from 9:30 to 11 a.m. on Sundays. और हिल्सबरो का जो सेंटर है, it goes from 10 to 11:30 on Sundays. Yes, on Sundays. And Kendall Park जो है वो होता है सैटरडे को from 3:30 to 5. तो आप लोग जो भी आपको पॉसिबल आप वहाँ जाके देख सकते हैं. And all this information and more you can know about the school on our website sanatanvidyalay.org. You can also like our Facebook page to keep get the updates about whatever is happening in school. You could call us on 908-671-1344 or you could email us on sanatanvidya@gmail.com. So we talked about learning new things right now, right? Shreya, Siya, Nitika. Do you want to tell Shreya this question for you? Like, you've been coming to Sanatan Vidyalay for 3 years, right? Yes. Do you like coming to school, first of all? Yes, because I learn new things every class. Okay. So you learn new things every class, that is so much right. But do you think the school has helped you in any way? Because I know we don't give any homework like that. So this is the only class where kids don't get homework and yet they like to come there, they're still learning. How has the school made you a better person, or what have you learned really, other than the stories and other concepts that we just discussed? The morals of everything we learn is basically to tell the truth and don't lie, and lies are going to get you in trouble and get you caught, and you're going to end up very bad if you lie. So be more of a happy, truthful person. Okay, so you learn to be more truthful. So we have another Piscataway student here. Her name is Idika and she's 9 years old. And Idika, can you tell me what level are you in? I'm in level 3. What are you learning this year? This year we're learning Mahabharat. Do you have a favorite character? I know Mahabharat is full of characters. Do you have a favorite character though? I actually don't. Okay. Okay, but what characters have you learnt about so far? I have learned about the 5 Pandavas so far. Their names are Yudhishthir, Nakul, Bhim, Sahadev, and Arjun. Okay, great. I think you'll need... when did you start the school? We started the school in September. Yes. I think for picking your favorite character, you need more time. Yeah, more time. So, okay. Yeah. So that's fun. Shreya, do you happen to have a favorite character in Mahabharat so far? I think it's Arjun because he practices a lot and he's trying to become perfect and yeah. Okay. So are you going to employ this in your day-to-day lives to practice more and... Yes, I will. Yes. Okay. So again, folks, you're listening to Sanatan Vidyalay's show called Gyanamrit, and this is brought to you by SKN Foundation. And if you want to give out the contact information once more. If you want to get in touch with us, you can call us at 908-671-1344, or you can go to our website, which is sanatanvidyalay.org. या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sanatanvidya@gmail.com, और हमारा फेसबुक का पेज भी है जिस पे आप जाके हमारी सारे इन्फॉर्मेशन और एक्टिविटीज देख सकते हैं. So kids come into the school like 5 to 12 years old typically, but 5 to 12. और क्या करते हैं हम लोग फेस्टिवल्स पे? जैसे श्रेया ने थोड़ा सा बताया, हम लोग जैसे अभी हम लोग in 2 weeks we are going to celebrate Navratri and Dashera and Diwali. Yeah. So हर साल मतलब हम लोग ये जो अपने मेन फेस्टिवल्स हैं we do celebrate. स्टार्ट करते हैं हम लोग गणेश चतुर्थी से ही. तो गणेश जी की पूजा करते हैं बच्चे और उससे शुरुआत होती है. उसके बाद हम लोग नवरात्रि और दशहरा दिवाली करते हैं.
फिर आगे हम लोग फील्ड ट्रिप्स भी हैं, मंदिर वगैरह ले जाते हैं बच्चों को, विच इज नाइस. उसका होली वगैरह सब ऐसे सब मेन जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, वी डू इट. So the enrollments are still open. If you're interested, go to the website and you can do an online registration. Or you can come and see if you want. Trial class आप ले सकते हैं और वहीं पे आप रजिस्टर भी कर सकते हैं. That is so excellent. So Dipti, when are we going to talk to our listeners next? हम लोग alternate Sundays आते हैं, तो next week, which is in 2 weeks. Yeah, in 2 weeks. And that will be 12:30 p.m. on EBC network. So until then, take care. Namaskar. Around the world, across the dial. This is the EBC Radio Network, WWTR.